Hi, good morning, everyone. This is Shefali Mam, and in this session, we will be discussing the concept of stack and its implementation. बच्चे stack और उसके implementation या applications काफी important है. Straightforward question आता है, बहुत easy scoring topic है. तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजली हम लीनियर स्टैक की बात करते हैं एंड सिंगल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. सो इन टुडे सेशन आवर मेन फोकस विल बी ऑन मल्टीपल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. मतलब एक एरे में एक से ज्यादा स्टैक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. डेफिनेटली आपके एग्जाम में इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ कंडीशंस आती हैं. Based on the condition for the empty stack or the full stack, you might be asked a question in the exam. So मेन एजेंडा रहेगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. आज के सेशन में हम कोई भी एप्लीकेशन डिस्कस नहीं करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. दोनों तरीके करेंगे. आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल वेज सो दैट कि जो भी आपको मेथड इजी लगता है, मोर ओवर इजी के अलावा हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है. सो विल गो विद दैट. ओके, सेशन के एंड पे आई बी डिस्कसिंग द शेड्यूल फॉर द मैराथन्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैराथन्स होनी चाहिए और अभी हाई टाइम है रिवीजन के लिए. सो डेफिनेटली थ्रू द क्वेश्चंस वी विल बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन होता ही होता है. सो वीकली आई बी कमिंग अप विद 2 मैराथन्स एंड डे और टाइम क्या रहेगा वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द स्टैक एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो हम पहले भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, तो फटाफट से इसको कवर करेंगे. सो स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक द एरे, लिंक लिस्ट एंड क्यू. द ओनली थिंग इज स्टैक बाकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो भी एलिमेंट एंड पे आएगा सबसे पहले वो एलिमेंट बाहर जाएगा. हम एग्जाम्पल के तौर पर एक पाइल ऑफ प्लेट्स कंसिडर कर लेते हैं. आप किसी शादी में गए हैं, आप कहीं डिनर के लिए गए हैं, लंच के लिए गए हैं, बुफे इज देयर. बुफे मींस वहां पे प्लेट्स पड़ी हैं, अपनी प्लेट उठाओ, जो भी आपको चाहिए लो एंड यू आर डन. सो हैव यू एवर वंडर्ड कि ये जो पाइल ऑफ प्लेट्स है, जिस तरीके से प्लेट्स रखी जाती हैं, जिस तरीके से हम प्लेट उठा रहे हैं, वो पैटर्न क्या है. जो भी प्लेट टॉप पे रखी गई है, डेफिनेटली जब प्लेट्स को सेट किया था तो जो बॉटम मोस्ट प्लेट है दैट मस्ट बी केप्ट एट द फर्स्ट नंबर. देन उसके बाद सेकंड प्लेट आई होगी, देन थर्ड प्लेट, देन फोर्थ प्लेट, फिफ्थ प्लेट एंड सिक्स प्लेट. बट जब हमने प्लेट्स उठानी शुरू की तो किस तरीके से पहली प्लेट बाहर जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टेकिंग द प्लेट फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो प्लेट सबसे एंड पे रखी थी पहले वो प्लेट बाहर जा रही. सो दिस इज नथिंग बट दिस वाज केप्ट एट द एंड, लास्ट इन, और सबसे पहले बाहर जा रही है, दैट इज फर्स्ट आउट. So a pile of plates is basically representing the stack. So stack की प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे एंड पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले बाहर जा रहे हैं. इसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन भी जज कर सकते हो. एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया. लेट्स से आई हैड द स्ट्रिंग लाइक ए बी सी डी, बट जब मैं इसको स्टैक में डलवाने के बाद व्हेन आई विल बी पॉपिंग आउट द एलिमेंट्स, पॉप आउट क्या होता है मैं डिस्कस करती हूँ. जब हम इन एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे सबसे पहले आपको डी मिलेगा, देन विल बी गेटिंग सी, देन विल बी गेटिंग बी, देन विल बी गेटिंग ए. तो एक चीज हमारे सामने आ गई कि अगर आपके पास ए बी सी डी स्ट्रिंग था, सो दिस इज द रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग. So here we are getting the reverse of a string. So one of the application of the data structure, stack data structure, is the reversal. Okay, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी applications हैं. So we'll talk about these applications in more detail in the upcoming sessions. So as of now, we'll focus on the property and the implementation. So this order can also be said as जो सबसे पहले आया था वो end पे बाहर जा रहा है, that is philo, first in last out. So this is first in last out. This implies that the
element that is inserted first will be coming out later. We have already considered this example. अब हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर दो बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते करते हैं. दैट इज adding the more element to the data structure or removing or deleting the element from the data structure. So adding the element to a stack, adding an element to a stack is known as push. तो बेसिक ऑपरेशंस क्या आते हैं यहाँ पे? पुश एंड पॉप. पुश का मतलब है एलिमेंट को ऐड करवाना. कहाँ पे ऐड करना है? फॉर दैट वी नीड टू हैव वन पॉइंटर वेरिएबल जो इस स्टैक की फंक्शनैलिटी को मैनेज करेगा. एंड डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है ये कौन बताएगा? कहाँ से डिलीट करना है ये कौन बताएगा? अगेन we need some pointer variable. So both the operations are controlled by one pointer variable that is known as top. तो हम top variable use करते हैं. Top बताता है कि अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है, let's say this is an array, एलिमेंट इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट होगा? टॉप पे. एलिमेंट डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट होगा? टॉप पे. इनिशियली व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी फॉर द एम्प्टी स्टैक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा. जहां पे मैं कंडीशंस डिस्कस कर रही हूँ, दैट मींस यू हैव टू कंसीडर दोस पॉइंट्स. सो टॉप, इनिशियली टॉप विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम एरे में क्या बोलते हैं? एरे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3. अगर मैं बोल रही हूँ top is equal to 0, that means top is pointing to the location 0. That means from this position you have to delete the element. Can we delete any element from the index 0? No, because this is empty. So array का पहला element index 0 पे आ रहा है. As of now we are saying that stack is empty. So this is pointing to -1. This is empty stack. So one thing that we have discussed here is, in order to maintain the functionality of the stack, we need one pointer variable, that is the top variable. So we can say that in programming terms, putting an item on the top of the stack, आप top पे element को put कर रहे हो, insert कर रहे हो, that is known as the push operation. And removing or deleting an element from the stack, that is known as the pop operation. Both the operations will be performed on the basis of the position returned by the pointer variable top. We have two types of stack. हम जो भी implementations करते हैं data structures की, we can implement it with the stack and with the array and the linked list. Array का size हमें पता है fixed होता है, so you should know that how many elements or what stack size is required. If you know that, then definitely we'll be implementing that with the help of the array. But if your stack is growing dynamically, that means as per the requirement stack का size grow कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है या फिर shrink हो रहा है, that is known as the dynamic size stack. So as per the requirement, you can add more elements or delete the elements or the nodes that is possible in the linked list. So that means in order to implement dynamic size stack, we'll be making use of the linked list. So you can see here, फिक्स साइज स्टैक, नाम से समझ में आ रहा है स्टैक का साइज फिक्स्ड है. ये अपने आप से ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकता. इट कैन नॉट ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली. अगर स्टैक फुल है फिर भी आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करते हो और इससे ज्यादा ग्रो तो कर नहीं सकता, देन इट विल गिव यू द एरर मैसेज सेइंग दैट दैट्स अ केस ऑफ ओवरफ्लो. ओवरफ्लो कंडीशन अंडरफ्लो के बेसिस पे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है. ओवरफ्लो इज सेइंग दैट इफ इन द स्टैक फुल, अगर स्टैक ऑलरेडी फुल है and still you are trying to insert an element in the full stack, then it will return the overflow. So overflow is nothing but adding
This condition will arise when you are trying to adding a new element or trying to add a new element to full stack. Trying, okay, let me write here. Trying to add a new element to the full stack, that is representing the overflow condition, and underflow hota hai. Underflow means you are trying to delete some element from the empty stack. Trying to delete an element from empty stack. Basic conditions है. सो अगर आपके पास डायनामिक साइज का स्टैक ले रहे हो, आप डायनामिक स्टैक साइज ले रहे हो, देन इन दैट केस ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन विल नॉट अकर. ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आपके पास फिक्स साइज स्टैक है. Dynamic size stack means it can shrink or grow dynamically. There is no fixed size as per the requirement. It will accommodate the more elements that you want to add, and if elements are deleted, then its size will be decreasing. So this type of stack is implemented using the linked list, implemented using linked list. And this type of stacks are implemented using array. That is the another difference. Implemented using array. Make sense? This is about the types of the arrays. Basic operation हमने discuss किए. Basic operations are like push, pop, is empty, is full and peek. Push का मतलब है किसी भी stack के अंदर जब आप नया element add करवाते हो, that operation is known as the push. Deleting the element from the stack, that is known as the pop. Is empty, जब आप कोई भी element को delete करते हो तो delete करने के लिए कोई element present होना चाहिए. Directly we cannot perform the delete operation because otherwise if the stack is empty and still we are trying to perform the delete operation, it will generate an error message saying that that's the case of the underflow. So we need to write some condition. We need to make sure that the stack should not be empty before performing the delete operation, or stack should not be full before inserting the element in the stack. So is full and is empty, मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है. जब यहाँ पे किसी भी फंक्शन के साथ is करके कोई टर्म आ जाए, then in that case it is going to return the boolean value. Boolean means either the result will be true or false. So is empty means is empty is true, that means stack is empty. Is empty is false, that means stack is not empty. Is full is true means stack is full. Is full empty means stack is not full. Peak is similar to pop, but the difference is peak के केस में जो topmost element होता है, that element will be returned without removing it from the stack. मतलब stack से element delete नहीं होगा, but in the result it will be returned, the topmost element will be returned. Whereas in case of pop, that is going to delete the topmost element. Return तो करेगा ही करेगा, plus stack से उस element को हटा देगा. So this is going to remove an element from the top of the stack. Here, it will return the value of the top element without removing it. This is the key point. Now let's move on to the implementation. First of all, let's understand the working of the stack data structure. We have already discussed one condition. अगर top की value -1 है, that means the stack is empty. रीजन बताया है क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है 0, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, लोअर बाउंड इज 0, सो दैट्स व्हाई
जीरो इंडेक्स पे क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट वैलिड एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से टॉप इज इक्वल टू जीरो फॉर द एम्प्टी स्टैक. दैट इज द डिफॉल्ट कंडीशन. बट अगर आपको एग्जाम में कोई एजम्पशन करने के लिए बोला है या कुछ और कंडीशन दी है, देन यू हैव टू कंसिडर दैट. अदरवाइज डिफॉल्ट हम कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया. ओके, नाउ first of all, before inserting the element in the stack, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एलिमेंट कब इंसर्ट करेंगे? जब उसके अंदर जगह है. डेटा स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया, उसको आप एक कंटेनर की तरह कंसिडर कर लीजिए. इन वन कंटेनर यू वांट टू ऐड सम एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट कब ऐड करोगे? जब उस कंटेनर के अंदर जगह है, राइट या फिर आपको एलिमेंट डिलीट करना है, किसी डब्बे में से कुछ बाहर निकालना है, कब निकालोगे? किसी कंटेनर या बॉक्स से कोई एलिमेंट आपको कब मिलेगा? व्हेन इट इज there in the container. If the container is empty, you won't get anything. So before performing the operations on the stack, we need to check whether the stack is full or is it empty. Full कब check करेंगे? When we want to add more elements. So before pushing the elements in the stack, we need to check the status is already full or not. Similarly, if I want to pop out the elements from the stack, I need to check the status of the stack, whether it is already empty or not. If the status is full, we cannot add the element. If the status is empty, we cannot delete the element. So for pushing the element, we need to increase the value of the top. Let's discuss what's the meaning of this point. यहाँ पे ले लेते हैं example. Okay. Let's say this is the stack and initially हमने बोला है top की value -1 है. Top की value -1 है मतलब कोई भी element नहीं है. Set कर लिया हमने. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Let's say we are having the fixed size stack and the size of the stack is 5. So possible addresses, possible location, possible indexes will be 0, 1, 2, 3, 4. 0 से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है, that means the size is 5. जब एलिमेंट इंसर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक इज इट फुल और नॉट. दिस इज एम्प्टी, सो डेफिनेटली वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट. पहला एलिमेंट कहां पे आएगा? वेयर शुड आई ऐड द फर्स्ट एलिमेंट? What will be the valid position for the first element? Come on. What will be the first position for the valid element? Obviously it's index 0. That's going to represent the first element. अब मुझे इंडेक्स 0 पे पहला एलिमेंट रखना है, बट टॉप तो -1 को पॉइंट कर रहा है. सो व्हाट शुड आई डू हियर? आई नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप. नाउ टॉप इज पॉइंटिंग हियर. आई कैन इंसर्ट द एलिमेंट ए. लेट्स से मुझे ए इंसर्ट करवाना. सो टॉप क्या बता रहा है? कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है दैट इज अवेलेबल एट इंडेक्स 0. आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट. So what I'll do is I'll increment the value of top. Now top will start pointing here and I'll insert the element in the stack B. So that means every time whenever we are inserting the element, we are pushing the element in the stack, first of all, we need to increment the value of top. Let's say obviously हमने ये बोला fixed size है तो array है. Array name I am taking here as sk index. Index कौन रिटर्न कर रहे हैं? टॉप. टॉप पे आप एलिमेंट को प्लेस करवा रहे. Basically this is how push operation works. So in the push operation, first of all you need to increment the value of top and then insert the element. So on pushing the element, we have to increment the value of top and place the element at the position which is pointed by the top. That is what we have done here. We'll be writing the code for the same as well. But before inserting the element in the stack, we need to check if the stack is full or not. अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसी को कंसिडर करते हैं. अगर स्टैक का साइज 5 है, if the size of the stack is 5, that is maximum size is 5.
maximum size of the stack is 5. तो possible index topmost element का index क्या हो सकता है? This is 0, this is 1, this is 2, 3 and 4. That is 4. अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास 10 elements आ सकते हैं, stack size is 10, then the index of the topmost element will be 9 because it is starting from 0. So this means that जब आप full check करोगे, obviously is आ रहा है तो boolean return करेगा. फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू. सो इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1, दैट मींस इफ टॉप इज पॉइंटिंग हियर, इसका मतलब आपका स्टैक फुल हो चुका. फुल कब होगा? इफ आई हैव केप्ट ऑल द 5 एलिमेंट्स हियर, ए बी सी डी ई. 5 एलिमेंट्स आ सकते थे, पांचों एलिमेंट्स आगे, टॉप इज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट, सो स्टैक इज फुल. सो इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1, then it is returning true, otherwise it will return false. Similarly, is empty, already we have talked about this. If top is equal to minus 1, then it is returning true, this otherwise it will return false. In case of the peak function, we are just returning the topmost element of the stack, where stack is representing the array, one dimensional array, तभी हमने यहाँ पे square bracket use की. Okay, ये कंडीशंस है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए. मेन पर्पस आज वाले सेशन का है मल्टीपल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. जिन लोगों ने सिंगल स्टैक नहीं देखा था उनके लिए मैं क्विकली रिपीट कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू द multiple stack implementation. But before that, one good news for you guys is we are conducting the UGC NET scholarship test, जिसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. एंड इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली यू गाइज हैव द नॉलेज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोगों की आधी अधूरी प्रिपरेशन है. वॉट एवर इज द स्टेटस, अपना स्टेटस चेक करने के लिए स्कॉलरशिप हो सकता है आपको मिल जाए. यू नेवर नो हु इज गोना गेट द स्कॉलरशिप, सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, and this scholarship test will be conducted on the 15th of May at 8 a.m. to 11:59 p.m. तो आपको approximately 16 hours का time मिल रहा है, and duration of the test will be 30 minutes. So as per your convenience, anytime you can attempt this test. Okay. Few more announcements are on the way, तो सेशन के एंड तक बने रहिए. Definitely you'll get to know few more announcements. Alright, फटाफट से चलिए कोड लिख लेते हैं पुश के लिए. So what are the steps? सबसे पहले हमने क्या बोला है? पुश का मतलब है आप स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो. इंसर्ट कब करवा सकते हैं? जब तक कंटेनर फुल नहीं हुआ, जब तक स्टैक फुल नहीं हुआ. That means the very first step is to check if stack is full or not. If not full, अगर स्टैक फुल नहीं है तो आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो. तो इंसर्ट करने के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? अभी अभी डिस्कस किया हमने. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीमेंट टॉप, देन जहां पे भी टॉप पॉइंट कर रहे हैं वहां पे आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा दीजिए. दैट्स इट. Now let's quickly write the code. Let's say the function name is push. कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, रिटर्न टाइप ले लो push. क्या पैरामीटर्स पास करेंगे? ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर बहुत सारे एरेज हो सकते हैं. वी नीड टू डिफाइन कौन से एरे, यानी कि कौन से स्टैक की बात कर रहे हो आप. व्हाट are the maximum elements that can be inserted? That is, we have to define the size of the stack. We need to provide the top variable, and also we need to provide what element you want to insert. तो यहाँ पे मैंने कुछ parameters लिए हैं, where S is representing the stack name, N is representing the size of the stack,
size of the stack. Top is representing the top variable and X is representing the element to be inserted. Algorithm हमने लिखा हुआ है. So once you are clear with the algorithm, easily we can write the code. First of all, we need to check if the stack is full or not. What is the condition? If top is equal to maximum size of the stack is n, अगर 5 है तो top किसको point कर रहा है? 4 को. Size 10 है तो top किसको point कर रहा है? 9 को. That is, if top is equal to n minus 1, हमने यहाँ पे फुल की कंडीशन चेक की. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो क्या रिटर्न करेगा? दिस इज गोइंग टू से दैट स्टैक इज फुल. printf stack is full and it will exit from the function. Otherwise, else means condition is false. If stack is not full, condition false हो गई तो क्या करना है? Increment top. Increment करवाया top को. After that, s of top is equal to x. This is the end of else, end of the push function. So basically, first of all, we need to increment the top. तो आप यहाँ पे pre-increment भी use कर सकते हो. Pre-increment, top को increment कीजिए and then put the value. So this is about the push function. Next we have the pop. कोई भी कोड लिखना है, कभी भी लिखना है, सबसे पहले एल्गोरिथम अपने दिमाग में सेट कीजिए. एल्गोरिथम देखिए एल्गोरिथम क्या बोल रहा है एंड आफ्टर दैट इंसर्ट द एलिमेंट और राइट द कोड. सो फॉर द पॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक. पॉप मीन्स टू डिलीट द एलिमेंट. अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक if stack is empty or not. So you need to know the condition for empty stack. Check if stack is empty or not. If stack is not empty, agar empty hai to that's the case of underflow. If stack is not empty, to kya karoge aap? You're gonna remove the element and decrement top. Remove element and then decrement top. कोड लिखने के लिए आपको ट्राई करना है. If yes, go ahead. Since here we are returning the top element because element delete करने के बाद आप return कर रहे हो, so use the return type. Let us assume the return type of the elements or the data type of the elements that you are inserting in the stack is int. तो मैं यहाँ पे int ले रही हूँ. It depends on the return type of the function. Data type of the elements. Pop कौन से stack में से? Stack name. Size not required because empty के लिए आपको size की जरूरत नहीं है. But usually when we provide the data structure, we provide the stack size and top is definitely required. Element आप नहीं बताओगे कि कौन से element insert करने हैं. वहां पे it makes sense. We need to provide the element that needs to be inserted. But जब आप element को delete कर रहे हो तो top पे जो भी element मिलेगा, we have to delete that element. So definitely here we won't be providing the element just the top. So here first of all we will check if the stack is empty or not. Can somebody tell me that what is the condition for the empty stack? If top is equal to -1, that means stack is empty. So we cannot delete the element.
print stack is empty and will exit from the function. Otherwise, since we want to return the deleted element, for this what we'll be doing is, let's catch the element in some variable. जो भी top के ऊपर element है, we have to delete that element. किसी वेरिएबल में ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल, कहीं पे भी डिक्लेयर कर लो. लेट्स से आई एम डिक्लेयरिंग इट हियर int y. So y is equal to top, and after that decrement the value of finish. So empty और full की condition समझ में आई. This is about the single stack. This is the condition for the empty and this is the condition for full. But this is the single stack implementation. What if I want to implement multiple stacks in a single array? Multiple stacks अगर आप दो से ज़्यादा लेते हो, then it may result into incorrect implementation. So usually जो question पूछा जाता है, condition पूछी जाती है, that is asked on the basis of two stacks in a single stack, or you can say that single array. How is that possible? How is it possible to implement two arrays, two stacks in a single array? किस तरीके से possible? हमने ये बोला है कि एक stack के अंदर आप elements insert करवा रहे हो. We are incrementing the top variable. Basically, elements has to be returned in the reverse order. चलिए इसको पहले समझते हैं. Then we'll be discussing the conditions. बाकी सब वैसा ही रहेगा. Let's say we have an array of size 10. मैं एक array ले रही हूँ size 10 का. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Imagine कीजिए, इसको बाद में कहते हैं टेक्निकली. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से देयर इज अ रेलवे ट्रैक और देयर इज अ सिंगल लेन रोड. दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है. रेलवे ट्रैक है, दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है. सो एनी हाउ बोथ द ट्रेन्स कैन ग्रो. कब तक? जब तक एक पॉइंट पे नहीं मिल जाती. अब कौन से पॉइंट पे आके मिलेंगी, कहाँ पे इनका आमना सामना होगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स और इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, राइट? तो अब वही चीज सेम हम इन स्टैक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इन टू स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन अ सिंगल एरे, इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग दैट हमारे पास एक सिंगल लेन की रोड है जिसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, या एक सिंगल रेलवे ट्रैक है जिसमें दोनों तरफ से ट्रेन अप्रोच कर रही है. सो हियर दिस इज ग्रोइंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, another stack is growing from the right side. Let me call as, let me take here two variables. जब हम दो stack implement कर रहे हैं, एक stack के implementation के लिए एक top variable चाहिए. तो अगर हम दो stacks को implement कर रहे हैं, so two top variables needs to be maintained. Let me take this as TL. L means left side से grow कर रहे हैं. मैं इसका नाम ले लेती हूँ R. It is growing from the right side. TL and TR. Initially left side से कोई element नहीं आया. What should be the initial condition? As of now this is empty. वापस घूम के चीज वही आएगी, insert करना है और element delete करना है. But before that we need to check for the conditions. If the stack is empty, left stack, one stack is empty, then what will be the condition? पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे आएगा तो इससे पहले वाला इंडेक्स क्या होगा? दैट इज सम इनवैलिड पोजीशन, सो इट मस्ट बी -1. Similarly, 9 is the valid position. Now it is growing from the opposite end. तो इससे इस बाउंड्री के बाहर कौन सा इंडेक्स आएगा? What will be the value? It is 10.
Here we have assumed max size, that is, I'm assuming that the value of n is 10. You can store 10 elements in both the stacks. Total 10 elements है, ऐसा नहीं है कि individually 10 elements आ रहे हैं. So 10 elements in both the stacks. So this is when the stack is empty. तो empty के लिए हमारे पास condition क्या होगी? TL is equal to, condition for empty is TL is equal to -1 and logical AND. हमें दोनों स्टैक के टॉप वेरिएबल की वैल्यू लेनी है. TL is equal to -1 and TR यहाँ पे मैंने 10 लिया, अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं देन व्हाट विल बी TR, इट इज इक्वल टू 10 बिकॉज जो लास्ट यहाँ पे टॉप इंडेक्स वैल्यू आएगी इट विल बी n-1, सो इट मस्ट बी इक्वल टू n. हम असाइन नहीं कर रहे हैं, इट्स द कंपैरिजन ऑपरेटर. So if TL is equal to -1 and TR is equal to n, then the stack is empty. पहला क्वेश्चन, empty की कंडीशन आई सामने. अब elements insert करने. Let's say I want to insert the first element in the left stack. So what should I do here? किसे point कर रहे हैं? It is pointing to -1. तो पहला element index 0 पे आएगा. I need to increment the value of TL. जब value increment हुई, this is pointing to 0. Now at S T of L, let's say that the array name is S. अब यहाँ पे हम element को insert करवा रहे हैं, let's say A. So I'm inserting the element here, that is A. What next? I want to insert the next element. Again, I'll increment the value of top. Now it will be 1. Top is pointing to index 1. TL is pointing to index 1. And next element will be inserted. Like this, if you are inserting the element in the left stack, so we need to increment the value of the top and then insert the element. What if I want to insert the element in the right stack? मुझे यहाँ पे element insert करना. First valid position is 9. Initial value is 10. So here it indicates that I need to perform the decrement operation. मुझे इस top pointer की value को decrement करना पड़ेगा. First of all, I'll be decrementing the top. Top is pointing to index 9. So here, this is TR. Now I can insert the elements. Let's say C. Again, I want to insert one more element, but before that, what we'll be doing is, let's update this. जो भी आपके पास updated top pointer है, वहाँ पे आपने element को insert करना. So this way, if you are inserting the element in the left stack, you have to first of all increment the value of the top and then insert the element. If you are inserting the element in the second stack, that is the right stack, so we are decrementing the value first and then inserting the element in the stack. So let's say this is D, E, F, G. There is no restriction. हो सकता है कि एक ट्रेन बहुत धीमे चल रही है, एक पॉइंट पे आके रुक गई, दूसरी ट्रेन ऑपोजिट एंड से अप्रोच कर रही है. सो इट कैन गो टिल एनी पॉइंट. सो G, H, I, J. सो बेसिकली TR हैज रीच्ड हियर. क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं? ओवरटेक क्रॉस कर सकते हैं? ऑब्वियसली क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ सिंगल लाइन और अ सिंगल ट्रैक. Now we can say that this is full. On what basis can we say that this is full? कैसे बोलेंगे कि ये full है? If I'll add the value of TL plus TR, अब ना तो right side से stack grow कर सकते हैं ना left side से because stack भर चुका. TL plus TR, is it equal to N? No. That means आप add नहीं कर सकते. Any guesses? कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे एंड होगा. लेट्स से TL बेसिकली फुल कब होगा? व्हेन TL एंड TR
both are side by side. TL and TR are side by side, तब हम बोलेंगे कि stack full है. Then we'll say that stack is full. तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे? साइड बाय साइड कब होंगे? टीएल की वैल्यू हमेशा टीआर से कम रहेगी, क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहे. टीएल लेफ्ट साइड से ग्रो कर रहे हैं. यूजली यही स्टेटमेंट, यही सिनेरियो दिया जाता है. अगर चेंज होता है, टीआर को लेफ्ट साइड से ग्रो करवा दिया या कोई और वेरिएबल ले लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं. बट दिस इज द सिनेरियो. सो टीएल एंड टीआर, अब जो भी वेरिएबल लेफ्ट साइड से ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी देन द वेरिएबल विच इज ग्रोइंग फ्रॉम द राइट साइड. So according to this one, we are saying that TL will always be less than TR. कभी इक्वल भी नहीं हो सकते. इक्वल का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से एक एक एलिमेंट आया और एक लोकेशन थी जहां पे दोनों स्टैक्स ने एलिमेंट इंसर्ट किए, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो इसलिए इक्वालिटी कंडीशन इसमें कभी नहीं आती. दिस इज ऑलवेज TL is less than TR. So what will be the condition? Side by side का मतलब क्या है? अगर एक इंडेक्स 5 को पॉइंट कर रहे हैं तो दूसरा 6 को कर रहा होगा. अगर एक पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहे हैं, then second one must be pointing to 3. TR is greater than TL. So what will be the condition for full? Can I say that this is nothing but TR will be equal to TL minus TL प्लस 1. TR की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इट इज 2. 2 वैल्यू कैसे मिली? TL में प्लस 1 कर दो. और you can also write this as TL is equal to TR minus 1. Can I say that? Can we say that? बेसिकली आज वाले सेशन का एजेंडा था मल्टीपल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. So this is how we can implement 2 stacks in a single array. I hope that this is clear to everyone. 2 stacks in a single array. So we have wrote the condition for full. So TR is nothing but that is TL plus 1, or you can say that TL is equal to TR minus 1. Make sense? तो कभी भी इन कंडीशंस को रट्टे नहीं मारने. हमेशा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, आप एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, पॉइंटर्स लीजिए, इंडेक्स वैल्यूज कंसिडर कीजिए, और जो भी आपको ऑप्शंस दिए, जस्ट eliminate the options. Okay, try to eliminate the options. So in the next session onwards, we will be discussing the applications of the stack. Although stack data structure widely used है, first one is to do the undo mechanism, यानी कि जो last operation किया था आपको उसको बाहर करना है. So that is nothing but that's the undo mechanism, which is used in regular lives, like when you are using the applications like the editors, Photoshop, etc. This is used for the syntax check for matching the braces, which we have discussed in detail. So it's like opening bracket jab tak aa rahe hain, push it into the stack. When closing bracket is coming up, it will be matched. Closing bracket is coming up, it is matched. एक और closing bracket आ गया तो match करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से समझ में आ गया parentheses are not balanced. So we had talked about this one in detail when we discussed the concepts of the compilers. It supports the concept of recursion, infix to prefix, or infix to postfix conversion, prefix to postfix conversion, expression tree construct karte ho. So all these applications are making use of the data structure, that is stack. So expression evaluation like postfix or prefix in compilers, forward and backward features in web browsers, star of Hanoi, Fibonacci series, tree traversal, string reversal,
All these are the applications of the stack data structure. तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ, मैंने आपको बोला था कि we will be having the marathon session, so this is the high time we'll be having the marathon sessions on paper 2 for computer science, and I'm going to disclose the time. Before that, those who wants to cover the whole syllabus in detail, so you can join the UGC NET booster batch. This is kind of the crash course, and in this you will be getting the free previous year question books. So currently the Super Mom sale is going on because of the Mother's Day, which is on coming Sunday. That is 12th of May. So that's why this sale is gonna end of 12th of May. Before that, अगर आप लोग register करते हो by using the coupon code that is Shefali S, you will get this plan for 4,550, and this will be valid till your exam. Okay, so you can grab this offer by 12th of May. Now let me discuss the schedule that we are gonna follow in the upcoming sessions. First of all, in the next session, we will be talking about the stack applications. As you know that we are having the alternate classes. मैं free classes का schedule discuss कर रही हूँ. Free classes दो platforms पे होती हैं. One is on the YouTube platform and other one is on the Testbook app. टेस्ट बुक, मैं फ्री क्लासेस की बात कर रही हूँ जो यूट्यूब पे होती हैं उनको तो यूट्यूब सेशंस जो आप लोग अभी ज्वाइन करके कर रहे हो, एंड टेस्ट बुक पे जो फ्री क्लास है दैट इज नोन एज द मास्टर क्लास. So in the master class, we will be discussing the questions on the basis of the topics that we are going to cover in the YouTube sessions. So in this one, we will be just covering the important concepts. अगर आप लोगों की कुछ particular demands हैं कि इस particular concept में ज़्यादा problem आ रही है, just let me know. I'll cover those concepts in the upcoming sessions. And whatever concept we are covering in the YouTube session, on the basis of that, in the master class, we will be solving the questions. Now, the time and the day for the classes. So we'll be having these classes at 9 a.m. YouTube sessions will be on Monday, Friday, and Sunday. Apart from that, master classes will be on Thursday. तो मंडे वाला टॉपिक जो हुआ है आपको टाइम मिल जाएगा, रिवाइज इट. देन Saturday. This is about the regular classes. Main thing, marathon. मैराथन का मतलब ही होता है थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी. सो विल बी हैविंग द मैराथन एट 5:30 p.m. I'll try to wrap up it by 7:30 p.m. बाकी प्लस माइनस 10-15 minutes हो सकता है. 5:30 to 7:30 p.m. on Tuesday and Saturday. अब आप लोग बताइए, you want to cover the concepts or the questions. Majority students की जो demand आई थी, they want to cover the previous year questions, that too subject wise. I thought of discussing the papers, like paper उठाया, then discuss it completely, next paper discuss it completely. But many students are like कि इस तरीके से revision नहीं हो पाती है because in one shot you guys are unable to cover 10 units of paper 2. So the suggestion is like कि subject by subject चलो, क्योंकि पहला subject जो हमने finish किया था that was the super coaching. Super coaching में we covered the data structures and the algorithms. So here we'll be having data structures and algorithms. So this Saturday we'll be having the session on data structures and algorithms. Okay, so this is all about this session. If you guys have any doubts, you can write in the chat section. Otherwise, I'll see you guys tomorrow in the masterclass and in the marathon.
आई होप दैट दिस सेशन वॉज यूजफुल, आपको समझ में आया। बाकी आप लोगों की जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है, मोस्ट वेलकम। You can join our Telegram group. Link is given in the description box. Have a look over the super coaching pattern. किस तरीके से चल रहे, क्योंकि super coaching में you are getting everything which is required for your preparation. And in order to get more details, or if you have any queries, you can make a call over the number which is shown on the screen. तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो डेफिनेटली इट विल गेट रिजॉल्व। बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, गो टू द ऐप and just see what all things are available. Okay, so this is all about this session. If you like this video, don't forget to click the like button, subscribe the channel if you are new on this channel, and hit the bell icon so that you get the notifications of the upcoming videos. This is all about this session. Thank you.